Good morning, everyone. Welcome in our English class. Hope you all will fine at your home. Students, today we will do revision of chapter 2 Wonders in the Water. Learning objects are a starfish have 5 a starfish has 5 arms and look like a star. A jellyfish looks like a bell. Its body is full of water. A seahorse swims with its body standing straight. An octopus has 8 arms. It sprays black ink at his enemy. A dolphin can see and hear very well, both inside and outside. The whale is the biggest animal in the sea. A crab can only run and walk sideways. A shark has very good sense of smell. Now we will do our scene passage 1. A jellyfish has a body that looks like a bell. जेलीफिश का जो शरीर है वो बेल यानी घंटी के जैसा दिखाई देता है. It has many long and thin arms around it. और इसके चारों ओर बहुत सारी लंबी और थिन और पतली भुजाएं होती हैं. बहुत सारी लंबी और पतली भुजाएं होती हैं. There are many kinds of jellyfish. जेलीफिश बहुत तरीके की होती हैं. A jellyfish has no eyes, no bones, no heart, no blood and no brain. यानी जेलीफिश के आँखें नहीं होती हैं, बोन्स यानी हड्डियाँ भी नहीं होती हैं, नो हार्ट इसका कोई दिल भी नहीं होता है, नो ब्लड इसमें खून नहीं होता है, एंड नो ब्रेन और इसमें दिमाग भी नहीं होता है. इट्स बॉडी इज़ फुल ऑफ वाटर और इसका जो शरीर है वो पानी से भरा होता है. यानी जेलीफिश का शरीर जो होता है वो बेल घंटी के जैसा होता है और वो पानी से बना होता है. इसलिए जेलीफिश में ना तो आँखें होती हैं, ना हड्डी, ना दिल, ना खून और ना ही दिमाग. नाउ वी विल डू क्वेश्चंस based on this passage, and each and every question's answer we will give by this passage of scene passage 1. Now look at question number 1. Write the answer of the following questions. Here are some questions. We will write the answers of these questions by this paragraph. Who has a body that looks like a bell? And we just read that a jellyfish has a body that looks like a bell. So this is the answer of question number A. So we will write this answer here. A jellyfish has a body that looks like a bell. Full stop. Now look at question number B. Is jellyfish has eyes, bones, heart और blood? क्या जेलीफिश के eyes, bones, heart और blood होता है? We read just that it has no eyes, no bones, no heart, no blood or no brain. So we will write here no jellyfish has no eyes, comma, no bones,
comma, no heart or no blood. Full stop. Now turn your page and take out page number 8. Now look at question number 2. Write opposite of strong and short. So we will write the answer of these opposites by the help of our seen passage 1. And here is the answer of those opposites. Long opposite is short and thin opposite of strong. So we will write the answer of these opposites: strong, thin, and shorts, long. Now look at question number 3. Find out two plurals from the passage. So here are many plurals like eyes, bones, and arms. So we will write any of two. So one is eyes and second one is bones. BONES, bones. Now look at seen passage 2. A crab has a flat body and 10 legs. क्रैब यानी केकड़ा के का जो शरीर है वो फ्लैट यानी समतल होता है एंड 10 लेग्स, और इनके कितने पैर होते हैं? 10 यानी 10 पैर होते हैं. द बॉडी इज़ अ हार्ड शेल, और इसका जो शरीर है वो बहुत ही सख्त कवच होता है. द फर्स्ट 2 लेग्स यानी इसके शुरुआत के 2 पैर आर लाइक बिग आर्म्स, वो बड़ी भुजाओं के जैसे होते हैं. इन फ्रंट टू होल्ड फूड, और ये सामने की तरफ होते हैं, और किस लिए होते हैं? होल्ड फूड, खाने को पकड़ने के लिए. यानी इसके सामने के 2 पैर बड़ी भुजाओं के जैसे होते हैं जो कि खाने को पकड़ने के लिए होते हैं, खाने को पकड़ने में मदद करते हैं. इट कैन ओनली रन एंड वॉक साइडवेज, और ये केवल दौड़ सकता है या चल सकता है कैसे? साइडवेज, यानी या तो वो अपने राइट चल सकता है या फिर वो अपने लेफ्ट चल सकता है, लेकिन वो सामने इन फ्रंट और बैक वेज नहीं चल सकता है. ओके, नाउ वी विल गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस by the help of this passage. Now look at question number 1. Give the answer of these questions. Question number A is, how many legs does a crab have? So we read just now that it has 10 legs. So we will write here a crab has 10 legs. Full stop. Look at question number 2. Discuss about crabs arm. यानी आर्म्स, क्रैब्स की भुजाओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वर्णन करते हैं कि कैसी होती हैं भुजाएं. तो राइट नाउ वी read that the first 2 legs are like big arms in front to hold food. So we will write this answer here. The crab's first 2 legs are like big arms in front to hold food.
Now look at question number C. Name the animal that can only walk sideways. And just now we read that a crab can only run and walk sideways. So we will write answer. The crab can only walk sideways. Now look at question number 2. Fill in the blanks. Question number A is the body is a dash shell. So this question is based on seen passage 2. So we will take help of this passage to complete these blanks. The body is a dash shell. So here the body is a hard shell. So the answer of blank is hard. So we will write here the body is a hard shell. Now look at question number B. A crab has a dash body. Which type of body? We will take help of the passage. A crab has a flat body. So we will write here the answer flat body. Now look at page number 9. Now look at page number 9. Question number 3. Write opposite of vertical or release. So we will take help of our passage to solve these questions. Vertical, and its answer is flat, and the opposite of release is hold. So we will write these answer here. The opposite of vertical is flat, and the opposite of release is hold. So students, this is the work we completed in our revision sheet. Hope you all have done this work in very beautiful handwriting. Till then, our next video. Goodbye everyone and take care. Be safe and healthy.